de dataji. Darsandikao kirpale jihake. Ajai velutaro hamari te pyake. Darsandikao kirpale jihake. Ajai velutaro hamari te pyake. Pilade dataji. Sanu hamari te nama pilade dataji. Dikade dataji. Udara santi jalake dikade dataji. Jo kakure apane te, soi deve. Jo mange kakure apane te, soi deve. Chaturati sakhi no vale apna.
Gimbakata ke avalokan kino das kaduka vidayo. Gimbakata ke avalokan kino das kaduka vidayo. Jomangeta kare apane somi deve. Jomangeta kure apane somi deve. Hare Jane Rakhe Guru Govinda, Rakhe Guru Govinda. Hare Jane Rakhe Guru Govinda, Rakhe Guru Govinda. Kantalaye avaguna savamete, Jnana pura ke bakeshinda. Kantalaye avaguna savamete, Jnana pura ke bakeshinda. Jo mangeta kure apane somi deve. 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 Nanak das mukte jo bole, iya muha sache hove. Nanak das mukte jo bole, iya muha sache hove. Jo mangeta kure apane somi deve. Jo mangeta kure apane somi deve. Thank you. राधास्वामी संतों की बानी बानी पलटू साहिब जी की कुंडलियां जाति भेद हरि को बदे सो बड़ा है जातन पूछे कोई हरि को बदे सो बड़ा है जातिन पूछे कोई। ये परम संत सदगुरु पलटू साहिब जी की बाणी है। This is the Bani of Param Sant Sadguru Paltu Sahib. पलटू साहिब जी अयोध्या में एक बड़े अच्छे पहुंचे हुए संत महात्मा हुए। Paltu Sahib has been a great saint who hailed from Ayodhya. इनका जीवन चरित्र बाबा अजैब सिंह महाराज जी का जीवन चरित्र
दोनों एक ही जैसा था। ये भी 15 साल प्राणायाम साधन किए, बाद में गोविंद साहब सदगुरु मिले, सुर शब्द का अभ्यास दिया, तो इनमें परिवर्तन आया। His life was quite similar to the life of Sant Ajaib-Kripa. He also spent nearly 15 years of his life doing pranayams, and after that he got Sadguru, Guru Gobind Singh, who initiated him on the path of Santmat, and after that he did the practices of Santmat. गोविंद साहब ये ब्राह्मण थे। हाँ हाँ हाँ, इनके गुरु जो गोविंद साहब थे वो ब्राह्मण थे। Govind Sahib was a Brahmin by caste. क्योंकि वो सुर शब्द का अभ्यास उनको मिला था और उन्होंने भी इनको सुर शब्द का अभ्यास दिया। So Govind Sahib was preaching on the Santmat, and he initiated Paltu Sahib. तो आप कहते हैं कि हरि को भजे सो बड़ा जात न पूछे कोई। हाँ, हर को भजे सो बड़ा है, जात न पूछे कोई। कहते हैं वही सबसे बड़ा है, वही सबसे बड़ी जात है जो उस मालिक के भक्ति से जुड़े हैं। So Paltu Sahib says that that caste is the highest of the highest order, where the person is doing the devotion of God Almighty. तो इसीलिए महात्माओं ने उन्हें हरिजन कहा है, हरि के भक्त। कहते जो हरि के भक्त हैं वही सबसे अच्छे जात हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ऐसे 4 जातियां मेन हैं, तो लोग ब्राह्मण को उच्च जात कहते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। महात्मा कहते हैं कि वही सबसे ऊंचा है जो उस मालिक के भक्ति से जुड़ा है। In the Indian caste system, there are 4 major castes, that is the Harijans or the Shudras, and the Kshatriyas, the Vaishyavas, and the Brahmins. So Brahmins were considered to be of the highest caste. So Paltu Sahib says that it is not the Brahmins, but it is anyone who does the devotion of God Almighty. He is of the highest caste. कहते हैं कि कबीर साहब जुलाहा थे और रविदास जी चमार थे, उन्होंने भक्ति किया तो बड़े बड़े राजा महाराजा भी आके उनको चरणों में मत्था टेकते थे। गगरन गौड़ के राजा पीपा भी उनके ही शिष्य थे। So likewise, if we see Kabir Sahib, he was a weaver by profession, and Ravidas ji was a cobbler by profession. So even though they had these professions, they had their devotion to God Almighty, and people from kings and noblemen, all of them came and bowed at the feet of these great masters. Even the king Pipa, he also was a disciple of Ravidas ji. हाँ, रविदास चप्पल बुन करके बेच के अपने परिवार का पालन करते थे और रात दिन उस परमात्मा की याद में लगे रहते थे। उन्होंने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, मेहनत करके चप्पल बेच के ही अपना गुजारा किया। Ravidas ji was a cobbler, and he used to make slippers, and he would sell those chappals or slippers or shoes, and he earned his livelihood like that. So he never asked anyone to give him any money, or though he had very rich disciples, he made his living from whatever chappals etc. that he made. एक बार मीराबाई रविदास की शिष्या थी। हालांकि मीरा ने 35 साल कृष्ण की आराधना किया था, लेकिन जब उनके पति गुजर गए तो मीरा गंगा स्नान के लिए गई और रविदास का सत्संग मिला तो मीरा उनकी शिष्या हुई। His initiates included Mirabai,
And Mirabai, though, spent nearly 25 years in the worship of Lord Krishna. But after the death of her husband, when she was walking by the Ganges one day, she happened to come by the satsang of Ravidas ji. And when she attended that satsang, she became a disciple, a follower of Ravidas ji. तो 6 महीने में रानी मीराबाई रविदास के दर्शन के लिए जाती थी। तो चित्तौड़ के वहाँ के लोग, ब्राह्मण, भेषधारी साधु ताना मारते थे कि देखो इतनी बड़ी छत्रानी रानी होके एक मोची माने चमार के झोपड़ी में जाती है। So she used to every 6 monthly visit Ravidas ji, and she was a queen and a Rajput. So the people and the noblemen would taunt her whenever she would go, that such a great queen and of such high caste, she goes to a cobbler and she has made a cobbler her master. हाँ, तो मीरा को बड़ा दुख होता। तो एक दिन मीरा ने एक कोहिनूर हीरा, जो सबसे कीमती था खजाने में, वो कोहिनूर हीरा छुपा के ले गई। और वहाँ जाके जब बनारस में रविदास के दर्शन के लिए गई तो उनके सामने रख के कहती है कि महाराज, मैं आपके दर्शन के लिए 6 महीने में आती हूँ तो लोग मुझे ताना मारते हैं, आप दया करो, ये हीरा बेच के यहाँ एक अच्छा बंगला बना लो। So people would keep taunting her whenever she would go from Chittor to Varanasi. So one day she decided to take a very precious diamond, a Kohinoor, from her treasury, and she took it and she offered it to Ravidas ji, and she requested him, saying that people taunt me when I come here, that the queen is coming to a cobbler's hut and she has made him a master. So I request you, if you can grace by taking this diamond, selling it and using that money to make a good mansion for yourself. तो हमारे आने जाने के लिए रास्ता खुल जाएगा, क्योंकि लोग ताना मारते हैं कि एक चमार की झोपड़ी में जाती है, बंगला हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। So that way it will be easier for me to visit you, because people keep taunting me that I go to your hut and I've made you a master. So if you can be so kind to sell this and make a big bungalow, it will be easier for me to come. तो रविदास जी कहते हैं, मीरा, मैं इसी झोपड़ी में पैदा हुआ है और इसी झोपड़ी में मुझे मालिक ने दर्शन दिया है, इसीलिए मैं झोपड़ी नहीं छोड़ सकता। ये हीरा हमारे काम का नहीं है, तो इसे वापस लेके जा। But then Ravidas ji told Mirabai that, look, I have been born in this hut and I have also had the manifestation of God Almighty in this very hut, and therefore I will not be able to leave this hut. So you please take that diamond back with you. हाँ, तो मीरा कहते, नहीं महाराज, मुझे शांति नहीं मिलेगी और ये जरूर आप बेच के यहाँ एक बंगला बना लो। But then Mirabai insisted. She said, I will not get peace like that. So I cannot accept this diamond back. So you please make a house, a bigger house for yourself. तो मीरा एक हफ्ता रही बनारस में, स्नान विस्नान करके दर्शन को आती थी। तो मीरा ने क्या किया, अभी महाराज का ख्याल शायद नहीं है, आगे शायद बेच के करेंगे। एक जैसे झोपड़ी में होल होते हैं ना, जगह जगह सामान रखने के लिए, गौखा कहते हैं, तो वो उसमें रख दिया मीरा ने। कहा महाराज आज नहीं तो कल बेच के और यहाँ एक घर बना लेना। So Mirabai stayed for a week there in Banaras, and she would visit and take darshan of Ravidas ji every day.
and then she felt that maybe he is not inclined to take that diamond now. So what I'll do is I'll just leave it with him. Maybe he may change his mind a little later. So she kept that diamond in a small compartment in the wall. So in the huts, there are these small compartments where people put lamps or other things. So she left her diamond in that compartment in the wall. और एक हफ्ते के बाद लौट आई, फिर 6 महीने के बाद जाती थी, फिर 6 महीने के बाद जब वहाँ जाने लगी तो सोचती है कि अब तो महाराज बड़े अच्छी तरह से होंगे, घर मकान पक्का बन गया होगा, अब तो बड़ा अच्छा लगेगा। और ऐसा सोच करके जब आई देखती है तो वही पुराना झोपड़ी, वही चप्पल बुनने का काम। तो आके नमस्कार करके पूछती है कि महाराज आपने हीरा बेचा ही नहीं? तो बोलते हैं कि बेटी मुझे हीरे से क्या काम। हाँ, तो कहते वो कहाँ है? तो बोलते जहाँ तू रखी होगी वहीं होगा। तो उस पर सब धूल जम गया था, काला कालिक लग गया था। तो मीरा ने देखा उसी में पड़ा है वैसे ही, उसके ऊपर सब काला काला धूल और काला काला धुआं का ये जम गया है, लैम्प जलाते थे उसका धुआं का। तो बाद में मीरा उसको साफ करके गंगा में धो के साफ करके वापस लेके गई। So Mira left it in that compartment, and she left thinking that he will use it later. And she used to visit every 6 months. So during her next visit, after 6 months, when she went to visit him, on the way she was thinking that perhaps he may have changed his mind and he may have used that diamond and made a big house for himself. So I would like to see that new house. So she was very eager to see what he had done of her diamond. And when she went to Ravidas ji's place, she found the same hut and the same work that he was doing of selling shoes and chappals. So when she went in and bowed down to him, she asked him as to whether he had not used that diamond that she had left behind. So he said that he has not used that. Then she asked him what happened of that diamond then, because she had left that diamond in his house. So he told her that you search wherever you have left that diamond, it will be there only. I have not touched it. So she saw that that diamond was in the very same place where she had left it. And with the suit of that lamp next to it, it had become all black. And she took that diamond, she cleaned it, washed it in the Ganges, and then she took that diamond back with her. तो वही पलटू साहब कहते हैं कि जो हरि की भक्ति करता है वही सबसे बड़ा जात है। ऐसे ब्राह्मण कुल में पैदा होने से कोई बड़ा जात नहीं बन जाता। हमारे महाराज भी कहते थे ये ब्राह्मण नहीं 12 मन है इनके अंदर, सबके अंदर एक मन होता है, इनके अंदर 12 मन है ही। तो कहते हैं कि और कहते थे महाराज कि ब्रह्म जाने सो ब्राह्मण, ब्राह्मण वही है जिसने ब्रह्म को अपने अंदर प्रकट किया है, यानी जो उस मालिक को अपने अंदर प्रकट किया वही सच्चा ब्राह्मण है, वो कोई भी जात का हो। So that is what Paltu Sahib says, that just by being a Brahmin, one cannot consider himself of the highest caste. Only that person who does the devotion of God Almighty, he is of the highest caste. So Somnath Babaji also used to say that Brahman is actually Baraman, which means Bara means 12. So one who has 12 minds, he is the Brahman. So it is not a person of the highest order, but it's a person of who is more egoistic and who carries 12 minds with him. जात न पूछे कोई हरि को बत बिहारी, जात न पूछे कोई हरि को बत बिहारी, जो कोई करे सो बड़ा जात हरि
तो वही कहते हैं कि जो भक्ति करता है वही बड़ा होता है। जब ये आत्मा मर के धर्मराज के पास जाती है कर्मों का गट्ठर सिर पे लेके, तो वहाँ धर्मराज ये नहीं पूछते हैं कि तू ब्राह्मण है क्षत्रिय है, क्योंकि जात पात तो यही रह जाती है। हमारे लोग ले जाके जला देते, चिता पे रख के 2 मुट्ठी राख बन जाती है। वहाँ क्या पूछते हैं कि तुमने क्या क्या कर्म किया, अच्छा या भला। हाँ, कितना बुरा किया कितना भला किया, अच्छा कर्म और बुरा कर्म। So he says that uh, caste is of no consequence. After death, when the jiva goes to the Lord of Judgment, there the Lord of Judgment does not see whether he is a Brahmin or he has been a Shudra, but he asks only what good deeds he has done and what bad deeds he has done. All the differentiation and all the castes and creed and everything is left behind when a person dies, and it is burnt. And in Hindus they burn on the funeral pyre after death, so that is reduced to a handful of ashes. So there is no caste and creed that goes with the person when he has to go to the Lord of Judgment uh, for the deeds he has done in his lifetime. कहते हैं जात पात तो बीच में पैदा हुआ है, ये हमारे आप जैसे लोगों ने बनाया है। परमात्मा ने कोई जात पात की नहीं रचना किया है। परमात्मा के यहाँ से जो आत्मा आई है उसका एक ही जात था, यहाँ शरीर में आके अलग अलग जात बन गया, तो ये सब बीच में पैदा हुआ। So God Almighty has not created any caste or creed. All this is all this casteism and creed and all these things have been created by us here. God has sent everyone uniformly. All the souls have come into this world with no distinction or nothing to distinguish them from each other. But it is all these differences have been made here only by us. कहते हैं आज से 550-600 साल पीछे कोई सिख नहीं था। गुरु नानक जी आए, 10 पातशाहियाँ, 10 गुरु साहिबान हुए। गुरु गोविंद सिंह जाने के बाद में सिख मता तैयार हो गया, और इसी तरह से आज से 1600 साल पीछे कोई मुस्लिम नहीं था। मोहम्मद साहब आए और उनके जाने के बाद एक मुस्लिम धर्म ही तैयार हो गया, और इसी तरह 2500 जो अभी चल रहा है 2500 बरस पीछे कोई क्राइस्ट नहीं था, क्रिश्चियन नहीं थे। ईसा मसीह आके गए और उसके बाद में क्रिश्चियन धर्म तैयार हो गया। और इसी प्रकार आज से 2500-3000 बरस पीछे कोई भी बौद्ध नहीं थे। बौद्ध भगवान आए और उनके जाने के बाद में बौद्ध मता तैयार हो गया। तो ये सब बीच में बनाया गया, हम लोगों ने बनाया, परमात्मा ने नहीं। परमात्मा ने 2 ही जात बना के भेजी है, एक स्त्री और एक पुरुष। So all these religions that we understand and that we see, all these are created by us only. So if we see about 600 years back, there were no Sikhs. And after Guru Nanak Sahib came and the 10 Sikh Gurus came, only after that the Sikhism as a religion began. And if we look back about 1600 years back, beyond that there was no Muslims, there was no only after Muhammad Sahib came that the Muslim religion started. And likewise it is 2023, so Jesus Christ came about 2023 years back. And before that there was no Christianity. And if we see even Buddhists, that will be about 2,500 to 3,000 years from the time Mahavir or Buddha came. Before that there was no Buddhism. So all these religions are all man-made. God Almighty has not created any religion. He has only sent
he has only created the concept of male and female. These are the only two religions that he has sent in this world. Nothing else has been made by God Almighty. It is our imagination and our concepts. बदिक जा मिल रहे पीर सदन के साई बदिक जा मिल रहे पीर सदन के साई गणिका विश्वास रही विमान पे तुरंत चढ़ाई तो कहते हैं अजामिल पापी था और सदन कसाई कसाई थे, माने के भेड़ बकरी काट के बेचते थे। लेकिन ऐसे लोग भक्ति करके बैकुंठ में गए, परमात्मा के धाम में चले गए। तो कहते हैं परमात्मा को भक्ति प्यारी है। He says that Ajamil was a sinner and Sadan was a butcher, but yet they got a place in the heavens because of their devotion to God Almighty. So, what is of the highest order is the devotion of God Almighty. और वो कौन है वेश्या? गणिका गणिका वेश्या थी, उसने सारी जिंदगी वेश्या का काम किया, लेकिन कहते हैं अंतमते सुगता। उसने उसकी एक बड़ी अजीब कहानी है कि गणिका का जब उम्र हो गया तो उसने सोचा हमने तो पाप बहुत किया है, अब कुछ पुण्य भी कमाना। तो उसका पाप इतना बढ़ गया था कि उसके जबान पे नारायण नारायण नहीं आता था। तो उसने क्या किया, एक तोता पाला और पिंजरे वाले तोते को सामने लटका के वो नीचे रख के उसको सिखाती थी नारायण नारायण नारायण, क्योंकि उसको सिखाने से इसका होता है काम। तो नारायण नारायण सिखाती थी। वो तोते को क्या होगा, 2-4-6 महीने में आदत पड़ गई। अब वो आँख जब गणिका को देखे तो आँख बंद करके नारायण नारायण करने लगे, तो ऐसा आदत हो गई उसको। So even Ganika, she was a prostitute, and most of her life she had indulged in lust, and she had built up a huge burden of sin. And towards the end of her life, she felt that she has to absolve herself from all of these sins. But such was the burden that she was not able to even pronounce Narayan as a name of the God. So she brought a parrot, and she put the parrot in the cage, and she started training him to say Narayan. So by teaching the parrot to say Narayan, she also was able to practice that word. तो बाद में एक दिन वो दरवाजे के चौखट पे बैठी थी और 4 बज रहे थे शाम का, और यमदूत आ गए, क्योंकि पापी आत्मा थी। यमदूत आके और उस आत्मा को शरीर मार पीट के शरीर से खाली कराने लगे। तो इतने में दर्द से छटपटा के नीचे गिर गई, बैठे बैठे नीचे गिर गई और हाथ पैर मारने लगी, क्योंकि अंदर इतनी पीड़ा थी। तो इतने में वो जब आवाज आया तो वो तोता घबराया, कोई बिल्ली तो नहीं आ गई। तो वो नीचे देखा तो ये छटपटा रही थी। तो आंख बंद करके वो नारायण 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 का जाप करने लगा, और इसके कानों में नारायण वो शब्द गया, नारायण का ख्याल आ गया, ये भी नारायण नारायण बोला। तो इतने में बैकुंठ दूत आ गए विमान लेके, और यमदूत को मार के भगा दिए, और इस आत्मा को विमान में बिठा के बैकुंठ लेके गए। So she has a strange story. So she trained this parrot to say Narayan, Narayan, Narayan. So whenever the parrot would see her, he would close his eyes and start repeating Narayan, Narayan that way. So she also practiced the word Narayan, and he also was trained to say Narayan whenever he would see her. So once it so happened that she was sitting by the door, and her last moments came, and the angels of death came, and they started pulling her soul out
and she had done a lot of sin. So they were kind of giving her punishment and taking her soul out. When she started suffering like that, she fell down and she started moving her hands and legs. Now, hearing that sound, the parrot woke up and he felt that some cat or something may have come. So he woke up and then he saw that it was Ganika who was lying on the floor. And the moment he saw her, he again closed his eyes and started repeating Narayan, Narayan. So, listening to the parrot's words of Narayan, Narayan, Ganika also started repeating Narayan, Narayan. And when she started repeating Narayan, Narayan, the angels from Vaikunt, that is Narayan's angels, they came from heavens and they beat the angels of death away and they took her soul to Vaikunt. तो कहते इस तरह से गणिका भी बैकुंठ गई, उसका भी मुक्ति हो गया। तो कहते हैं कि जात पात से मतलब नहीं है, हर को बजे सो हर का होई। जो परमात्मा की भक्ति करता है वही परमात्मा को प्यारा होता है। So that way, despite her sins, she also got a place in the heavens. So Paltu Sahib says that one should not look at the caste, but should look at the deeds and see that those who do the devotion of God Almighty, they are of the highest caste. नीच जाति रैदास आप में लिया मिलाई, नीच जाति रैदास आप में लिया मिलाई, लिया गदी को गोदी दिया बैकुंठ पटाई। तो वही आप कहते हैं फिर नीच जात रविदास, रविदास चमार थे, लेकिन भक्ति करने से परमात्मा ने अपने अंदर उन्हें स्थान दिया और लिया गिद्ध को गोद। गिद्ध जो राम और सीता को लेके जा रहा था वायु माने ऊपर से विमान से, तो वो जटायु गिद्ध वो ऊपर घूम रहा था। उसने देखा अरे सीता को लेके जा रहा है, तो उसने रावण से के साथ युद्ध किया सीता को छुड़ाने के लिए। तो उसने तलवार से उसके पंख काट दिए और वो वहीं गिरा था। तो राम जब जाने के समय, वो तब तक वो प्राण में था, राम का नाम लेते, तो उसको गोद में उठा के राम ने उसको मुक्ति दिया, बैकुंठ भेजा। तो वो गिद्ध था लेकिन वो भी बैकुंठ गया। तो कहते हैं कि इस तरह से जात पात का सवाल नहीं है, जो परमात्मा की भक्ति करता है वो परमात्मा का प्यारा होता है। So he gives the example of Ravidas, who was a cobbler, and by his devotion of God Almighty, God Almighty gave him a place within himself. And likewise, he says that Jatayu, who was an eagle, and in the Ramayana it is written that when Ravan he took Sita and he was flying back to Lanka. He kidnapped Sita and he was flying back to Lanka. And when he was flying, Jatayu came and he started fighting with Ravan to stop him from kidnapping Sita. And Ravan then cut off his wings, and that way he fell down to the ground with his wings cut off. And he was still alive, and in the remembrance of Ram, when Ram found him in that state, and only when he found him in that state, he gave him riddance from that life and gave him a place in heaven. So that is what Paltu Sahib says, that even a bird, even an eagle got riddance and he got a place in the heavens because he was remembering God Almighty. He was remembering God at that time. पलटू पारस के चुए लो कंचन होए, पलटू पारस के चुए लो कंचन होए, हरि को बदे सो बड़ा है, जात
पूछे कोई। तो एक पलटू साहब कहते हैं कि जैसे पारस से स्पर्श होके लोहा की जात बदल जाती है, सोने में परिवर्तित हो जाता है, चाहे वो लोहा कसाई का हो, चाहे वो लोहा ब्राह्मण का हो। पारस ये नहीं देखता है ये कोई नीच जात का गला काटने वाला है और ये उच्च जात का पूजा करने वाले का है। जो भी उससे स्पर्श होता है वो सबको सोना बना देता है। So Paltu Sahib gives an example and says that, like the philosopher's stone, it converts whatever iron that comes in its contact into gold and transforms that iron. It does not see whether that iron belongs to the knife of a butcher or it belongs to some high priest, but it just sees the iron and converts it when it comes into contact with that iron. Like that, God Almighty also, when one does the devotion, that distinction is not made by God Almighty, and that soul is absolved of the sins. तो कहते हैं ऐसे वो नाम बड़ा ऊंचा चीज है, उसका जो सुमरन करता है वो नाम, चाहे वो पापी होवे या पुण्यवान होवे, नीच होवे या ऊंच होवे, वो नहीं देखता, वो सबको अपने जैसा पवित्र और निर्मल बना लेता है। So that is how the Naam also reacts to anyone who does the devotion of Naam. It doesn't see whether that jiva is a sinner or that jiva has done good deeds or bad deeds. It looks at all the jivas equally, and whoever comes in contact with that with the Naam, it purifies that jiva. पलटू पारस के छुए लोहा कंचन होए, हरि को बजे सो बड़ा है जातन पूछे कोई। साहिब के दरबार में केवल भक्ति प्यार, साहिब के दरबार में केवल भक्ति प्यार। फिर ये पलटू साहब दूसरी बाणी ले रहे, कहते हैं कि साहिब के दरबार में केवल भक्ति प्यार। परमात्मा के यहाँ सबसे प्रिय क्या है? भक्ति। हाँ, कहते हैं उनको भक्ति चाहिए, वो भक्ति जिसके अंदर है वही उनका प्यारा है। So now Paltu Sahib says in the other Bani that in the court of God Almighty, only importance is given to devotion. He only looks for those who are doing devotion. हाँ, तो कहते हैं कि उसका भी बहुत तरह से उदाहरण दे दे के पलटू साहब समझाने की कोशिश किया है जी। So that way Paltu Sahib has given different examples and has explained in this Bani. केवल भक्ति प्यार साहिब भक्ति मेरा जी, केवल भक्ति प्यार साहिब भक्ति मेरा जी। सजा सकल भगवान लिया दासी सुतबाजी। तो वही कहते हैं कि एक बार दुर्योधन श्री कृष्ण को आमंत्रण दिए भोजन के लिए, और श्री कृष्ण ने आमंत्रण स्वीकार किया, और दुर्योधन ने बहुत तरह के मिष्टान भोजन और बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनवाए थे, और कृष्ण समय पे तो आए जरूर, लेकिन दुर्योधन के राजमहल के बगल में विदुर का घर था। विदुर दासी का लड़का था, राजा के जो दासियां होती थी उनका लड़का था। लेकिन पति पत्नी दोनों कृष्ण भक्त थे, परमात्मा के भक्त थे। तो कृष्ण वहां तक आके विदुर के राजमहल की तरफ जाने के बजाय कर रही थी। विदुर बाहर गए थे और बर्तन साफ कर रही थी,
और ये जाके कहते हैं कि बहुत भूख लगा है और कुछ है तो दे. So once Duryodhan, Duryodhan invited Lord Krishna for a luncheon, and Lord Krishna accepted the invitation. But at the time that he was invited, he went to the palace of Duryodhan, but the house next to the palace was that of a maid of the king of Duryodhan and his predecessors. So that maid's son was Vidur, who was a devotee of Lord Krishna. He and his wife both were great devotees of Lord Krishna. So Lord Krishna, though he had accepted the invitation of Duryodhan, when he came near the palace, instead of going to Duryodhan's place where a huge luncheon had been arranged and lots of different kinds of meals had been prepared, he did not go there. Instead, he went to the house of Vidur. And when he went to that house, Vidur's wife was cleaning utensils. So Lord Krishna then went inside and he told her that he was feeling very hungry and he wanted to eat something. तो औरत कहती है, महाराज हम दो ही को खाना बनाए थे, बाजरे की रोटी और साग, और हम लोग खा के अब बर्तन साफ कर रहे हैं, आप थोड़ा पहले ही आ जाना था. So when he told her that I'm feeling hungry, give me some food, she said that I had prepared meals only for two people, Vidur and myself, and we finished our meals and I was just cleaning the utensils. So I had made some bajra roti and some green vegetables. So that is over now. तो बाद में कहते देख बर्तन में कुछ लगा होगा, तो वो साग बनाई थी वो सब कढ़ाई में लगा हुआ था, तो कहते वही थोड़ा सा दे. तब उसने क्या किया बेचारी, तो वो इतना प्रेम में मग्न हो गए उनको देख के, वो सब भूल गई और वो लाया पत्तल रखा और वही खुरुच खुरुच के देने लगी. वो साग जो लगा हुआ था बर्तन में जला हुआ था, वो खुरुच खुरुच के देने लगी और ये प्रेम से खा रहे हैं और खा के कहते मेरा पेट भर गया. So so when he told her that he was hungry, she said, the food is all over. I had only prepared for two people. He said, anyway, just check in the utensils if there is something left inside. So she had prepared some green vegetables, leafy vegetables, and some of that had stuck on the utensil. So he said, okay, never mind, you just give me that much and I'll eat it. So she also was so much in love with with Lord Krishna that she also did not think, and she just brought that utensil and started scraping the sides which were burnt. So she started removing that scrapes of vegetables which were stuck on the utensil and started offering that to Krishna. And Krishna ate all of that and he felt, now my stomach is full. तो एक बार कृष्ण अकस्मात आ गए और वो घबराई कि महाराज आ गए, घर में कुछ नहीं, केला है खाली पड़ा. तो केला उनको बिठाई आसन दे के कहते महाराज बैठो थोड़ा केला खा लो. अब वो इतना प्रेम में अपना शरीर भूल गई कि वो निकाल रही, केला छिल रही है, गुदा नीचे रख रही है और छिलका इनके हाथ में दे रही, और ये बड़े प्रेम से छिलका खा रहे. She another occasion she was asked to offer food. So she said there are bananas and I can offer you bananas to eat. And she was again so much lost in that love and that devotion of Lord Krishna that when she got the bananas, she peeled the bananas and instead of giving him the fruit, she gave him the peel and threw the fruit.
So she continuously was offering Lord Krishna the peels of bananas, and he was eating them with love, and he didn't say anything. इतने में विदुर आ गए और देखा ये जो असली गुदा है वो नीचे रख रही है और छिलका हाथ में दे रही है। तो कहते अरे तू क्या कर रही है? तो बोलता हाँ, तो उसको ख्याल आ गया। बोला अरे मैं तो छिलका दिया और ये महाराज खाते रहे। इतना भूल गई थी वो प्रेम में। So so at that time Vidur came in the house, and he saw that she was offering banana peels to eat, and Lord Krishna was eating those banana peels, and she was throwing away the fruit. So he immediately told her, and he told her what she was doing. And then she realized that, oh, actually I am giving him peels, and Lord Krishna is also just eating the peels. तो बाद में कृष्ण हंस के कहते हैं कि विदुर तुमने क्या किया? जो स्वाद उस छिलके में था अब ये गुद्दा में नहीं है वो स्वाद। So then Lord Krishna told Vidur that, oh, you should not have disturbed this. The taste that I was getting from the peels, I will never get from that fruit. जप तप नेम आचार करे बहु तेरा कोई, जप तप नेम आचार करे बहु तेरा कोई, खाए शिवरी के बेर मुए सब ऋषि मुनि रोई। तो वही दूसरा उदाहरण देते हैं पलटू साहब जी कि जब राम और लक्ष्मण, जैसे वाल्मीकि रामायण में पहले लिखा था 10,000 बरस पहले ही राम पैदा होने के, कि राम का अवतार होगा, पंपापति सरोवर में आएंगे और वहाँ ऋषियों मुनियों को दर्शन देंगे, पहले ही लिखा था। तो बहुत सारे ऋषि मुनि वहाँ जाके आश्रम बना के रहते थे दर्शन के लिए, और वहीं एक भिलनी सेवरी थोड़ा दूर पे रहती थी, लेकिन उसमें प्रेम था, इनमें अहंकार था। तो राम आए तो इनके सामने से ही जा रहे हैं, ये लोग सब देख रहे हैं, लेकिन राम सीधा गए और सेवरी की झोपड़ी में चले गए, और सेवरी ने हाथ पानी धुलाया पैर और आसन लगा के अंदर बिठाया, और बड़े प्रेम से जो बैर जमा करके रखी थी, जूठे बैर, वो प्रेम से दे रहे खा रहे। तो ये लोगों ने सोचा कि यह तो अवतार नहीं होगा, अवतार होता तो हमारे जैसे बड़े घर में आना था। हम ब्राह्मण क्षत्रिय 6,000 8,000 बरस से तपस्या कर रहे हैं और एक नीच जात की झोपड़ी में गए, तो अभाव आ गया। बोले चलो परीक्षा लेंगे। सब लोग मिलके परीक्षा के लिए आए, झुक झुक के देखते हैं तो सेवरी बैर दे रही और आप बड़े प्रेम से खा रहे हैं। तो देखे बोले वो ये अवतार नहीं है, अवतार होता तो जूठे बैर खाता, इसको इतनी भी ज्ञान नहीं है। तो फिर कहते अच्छा चलो परीक्षा लेंगे। तो लोग हाथ जोड़ के कहते महाराज पंपापति सरोवर का पानी इतना गंदा है, नहाने धोने काम में आता है लेकिन पीने काम में नहीं आता है। So during the Ramayana, Valmiki Ramayana was written about 10,000 years before Rama actually incarnated in this world. And everything that was to happen was written in the Valmiki Ramayana. So a lot of learned people or a lot of Kshatriyas, Brahmins, they had read this Valmiki Ramayana, and they accordingly started locating and residing near the Pampavati Sarovar, where it was said in the Valmiki Ramayana that this incarnate of Lord Vishnu will come here and he will visit this place. So they all set their residences and their ashrams in anticipation of Lord Rama, that when he visits, he will definitely visit our ashram. So all of them were residing there. And nearby there was also a tribal woman called Shabri, and she had also made a small hut. And she was also a great devotee of Lord Rama, and she had also set her hut there.
hoping to meet Lord Rama and take his darshan when he comes. Now, what had happened was all of these people had great ego because in their ego of being of Brahmin, of higher castes or doing a lot of austerities, they were all filled with ego. Whereas Shabri had all the humility. And when actually Lord Rama came, he did not visit any of the ashrams and he just passed them by and went straight into the hut of Shabri. When he went into the hut of Shabri, all these people were astounded and they were surprised how a great avatar of Lord Vishnu chooses to go to a tribal woman and not come into our ashrams or our houses where we have done these kind of austerities in anticipation. So they said, nevertheless, let us see what is happening. And they went there. Now, when Lord Rama went inside the hut, he was offered berries which Shabri had saved for him. She had taken berries from the shrubs nearby and she had tasted all the berries to make sure there are no insects and whether they are of good taste. So, in the process, she had eaten half the berry and saved the other half. So, when Lord Rama came in her hut, she offered those berries which were handpicked by her. And when all these people saw what was happening, they felt that this doesn't seem to be an incarnation of Lord Vishnu. I mean, someone who will go and visit a tribal woman and then go into her house and then eat her half-eaten berries. This doesn't look like like Lord Vishnu's incarnate. However, it is written, so we have to test him out. So they decided to test Lord Rama. तो बाद में राम इनके मन की बात समझ के ही वहाँ गए थे सबरी के घर। तो राम ने कहा, भाई आप तो इतने बड़े बड़े तपस्वी हैं, आपसे बड़ा कौन है, आप अपना पैर धो के डाल दो, निर्मल हो जाएगा। तो ये लोगों ने सोचा हाँ हो सकता है। तो सब लोग अपना पैर धो धो के पानी डालते हैं, तो वो उतना ही गंदा और उतना ही कीड़े बढ़ गए। So when they decided to test him, there were a lot of insects in that Pampavati Sarovar, in that lake, Pampavati lake. So they decided to test him and they requested him that he should bless that lake. He should put his foot in the lake, and with that, because he's an incarnate of Lord Vishnu, it will clean up the. Lord Rama had already understood their ego and he had purposely done all of this so that they would understand. So when they came and made this request, they placed this request before him. He told them that you are all such great sadhus and munis and such great people who have done so much austerities. So actually, your feet should be washed in the lake, and by washing your feet, this infestation should go. So they felt that perhaps he is right. Maybe we are attained souls, and if we place our feet in the lake, actually we'll clean the lake. So they all started doing that. उतना ही गंदा हो गए, उतने ही कीड़े बढ़ गए। तो भाग के आते कहते महाराज और कीड़े ही बढ़ गए, साफ नहीं हुआ। तो बोलते ये सेवरी अगर पैर धो के डाल दे तो निर्मल हो सकता है। अब सेवरी कांपने लगी, महाराज मैं हाथ लगा दूं तो इनके काम में न आवे, मैं पैर धो के पानी डालूंगी तो ये कैसे पिएंगे, नहीं माता तू जा। तो सबरी डरते डरते गई, वो अपने पैर आधा बाधा धो के डरते डरते डाल दिया। तो जैसे ही सेवरी के चरणों का पानी अंदर मिला और सारा सरोवर एकदम निर्मल पवित्र हो गया। So when they all washed their feet, the insects only increased and it became even more dirty. So they quickly came back to Lord Rama and they said, no, this has not helped. Our water from our feet is not helping. So he said that, okay, then let us try Shabri's feet. So he told Shabri that, go, you wash your feet in the lake and come. Now she was of a lower caste and she felt that if I wash my feet, even people don't drink water which I touch.
let alone washing my feet in that water. So she got very scared doing all this. But Lord Rama gave her the. He told her that don't mind, you go there, don't get scared, and just put your feet in the lake. So she somehow went there, quickly washed her feet, and put that water in the lake. Now, as soon as that water went in the lake, the infestation cleared up in that lake, and that lake became very clean. तो कहते हैं कि इसलिए उद्धव ऋषि मुनियों का अहंकार दूर हुआ कि राम हमारे अंदर अभिमान होने से राम ने परीक्षा लिया और सब जाके राम के चरणों में गिर गिर के रोए, माफी मांगा. So after this incident, all the rishis, munis who were there, they understood that this was in fact a teaching to us for our ego. And Lord Rama has done this so that we understand. And then they bowed down at the feet of Lord Rama. तो वही कहते हैं कि उन लोगों में अभिमान होने से राम उनके घर नहीं गए और सेवरी के घर जाके जूठे बेर खाए, क्योंकि परमात्मा को भक्ति प्यारी है. So therefore Paltu Sahib says that it is because of the ego that the Lord did not go in those houses, and it is because of the egos that it is because of the devotion and love that the Lord chose to go into the houses of his disciples and his loved ones who are devoted to him. किया युधिष्ठिर ने बटोरा सकल समाजा, किया युधिष्ठिर ने बटोरा सकल समाजा, मर्दा सबका मान तू कुछ बिन घंटन बाजा. फिर वही पलटू साहब जी और एक बड़ा उदाहरण है महाभारत के बाद में. अब कृष्ण जिन्होंने कहा था कि ये सबको मैंने खाली तुम्हें नाम मात्र को खड़ा किया है, सबको करने कराने वाला मैं हूँ, तुम्हें कोई पाप नहीं, पुण्य नहीं, कर्म नहीं, धर्म नहीं बोला था गीता में. फिर अर्जुन ने क्या किया? अर्जुन युद्ध करने वाला नहीं था, क्योंकि दोनों तरफ अपने ही लोग मारे जाएंगे तो ये राज्य लेके हम क्या करेंगे. और वो धनुष बाण नीचे रख दिए. कहानी बहुत बड़ी है. तो बाद में कृष्ण को बहुत बुरा लगा कि जो मेन पार्ट जिसको मैं खड़ा किया अपना ताकत देके, वही बाण नीचे रख रहा है धनुष. तो उनको गुस्सा आया. तो उन्होंने जो है अपना विराट स्वरूप बता दिया कृष्ण ने, कि क्या कहा, अहम कालस्मि, मैं ही कालो बता दिया एकदम विराट स्वरूप कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश्वर मेरे अंदर से आए हुए हैं, 33 करोड़ देवी देवता मेरे अंदर से आए हुए हैं, मैं ही महाकाल, मैं काल हूँ, ये सृष्टि करता मैं काल हूँ, और तू अगर युद्ध नहीं करेगा तो भी तू बचेगा नहीं. तब उसने सोचा इनके हाथों से मरने के बजाय युद्ध करके मरना अच्छा है. तब उसने युद्ध किया डर के मारे. अब युद्ध खत्म हो गया. पहले क्या बोला था, तुम्हें कोई कर्म नहीं, धर्म नहीं, ये नहीं, वो नहीं, करने कराने वाला मैं हूँ, तुम्हें पाप नहीं, पुण्य नहीं. और बाद में क्या कहते, तुम्हारे कुल का तुम्हें इन्हें मारने से तुमको कुल पातक लग गया, अश्वमेध यज्ञ करके पाप होना चाहिए. अब अश्वमेध यज्ञ कोई छोटा मोटा यज्ञ नहीं, महाभारत में सब सर्वनाश हो चुका है. So during the Mahabharat, this is a very long story. During the Mahabharat, Lord Krishna, there is a Gita written on this, and when the warring parties were facing each other, Arjun, whose charioteer was Lord Krishna, when he saw that on both sides it is his own family which is there, and that he would be killing only his own families on both sides, and what is the point of winning a war like this where you end up killing your own families. But then Lord Krishna, he uttered the Gita there, and he told him that, look, you have to do your duty.
and as a duty, if you do this, then there is no karma, that you're only doing this without any expectation. And like that, he said many things, which because he wanted Arjun to fight that war. Arjun was his main weapon for this war, Mahabharat. And even after all of that, also Arjun put down his bow and arrow, and he refused to fight. Then finally, Krishna showed him his Virat form. Virat form is the form of Kal, where he said that, look, I am Kal, and all these 330 gods and goddesses have come from me, and Brahma, Vishnu, Mahesh are also my forms. They have come out from me only. So I am the one who's doing all of this, who's the creator and who's the destroyer of all of this. So so whether you fight or you don't fight, you're going to have to go, and you will also be destroyed in the same way. So whether you fight or don't. So then then Arjun got scared by seeing this form of Virat, and he therefore chose to fight at that point. So after all of this happened and the Mahabharat got over, and most of the family was destroyed in the war, and a lot of death and destruction happened in the war. And after all of this, then Krishna told the Pandavas, the winning family, that look, you have done all of this, and you have built a huge burden of sin because you have done all of this. And the only way you can cleanse yourself of this sin is by doing the Ashwamedh Yajna. That is, you perform the ritual of Ashwamedh, which is a very difficult ritual. And only if you do that, then you will be able to get rid of the sin that you have built by fighting like this. तो इसीलिए कहने का मतलब कि अगर वो गीता में कहते हैं आपको पाप नहीं पुण्य नहीं करने कराने वाला मैं हूँ, तो उनको पाप कहाँ से आ गया बाद में? अब वो बेचारे लोग को अश्वमेध यज्ञ करना पड़ा। अश्वमेध यज्ञ में भी कृष्ण भी खाना खाए, घंटा नहीं बजा, तो बोलते हैं महाराज और कौन बाकी है? तो कहते हैं यहीं किलोमीटर पे जंगल में सुपुच है, वो जात के चमार है, भंगी है, अगर वो आके खाना खा लेंगे तो होगा। तो बहुत बड़ी कहानी है, कहने का मतलब जब तक वो आके खाना नहीं खाए आकाश में घंटा नहीं बजा और इनका यज्ञ पूरा नहीं हुआ। So the point of telling you all this was that despite everything that was said in the Gita, that you do your actions without the fruit and you do it as a duty, despite doing all of that, finally the Pandavas had to face this sin, and they had, if what is said in Gita was right, then they were not required to do this Ashwamedh Yajna. But they had to do it because they had built a burden of karmas as a result of that war. So finally they decided to do this Ashwamedh, and in the Ashwamedh everyone has to be invited, and everyone has to eat, and they have to be served. But even Lord Krishna, after he ate in this Ashwamedh Yajna, the bell did not ring in the skies, because the bell rings when the gods and goddesses are pleased with the offerings. So everyone was wondering what happened. Now we have given food to everybody, and yet it is not yet we have not done it satisfactorily. So then Krishna told that there is nearby, a few kilometers away, there is Supuch, who is of a lower caste, and if he comes and eats, then this yajna will be successful. So that's a long story of how he was called, etc. But finally Supuch came, and only when Supuch ate food in the yajna, only then the bell in the heavens rang, and they were absolved of their sins. क्योंकि वो द्वापर युग में कबीर
उन कबीर के ही शिष्य थे, जब तक वो खाना नहीं खाए आकाश में घंटा नहीं बजे। So he was the disciple of Kabir Sahib in the Dwapar Yuga. जो द्वापर So only when he came that and he ate the offerings of the Pandavas, only then the bell rang and the yajna became successful. पलटू ऊंची जाति को जिन कोई करे अहंकार, पलटू ऊंची जाति को जिन कोई करे अहंकार, साहिब के दरबार में केवल भक्ति प्यार। राजा चालू माडो हाँ हाँ बंद